Hello friends, in this last video for atoms, we will be discussing about ionizations and excitations. What is that? Ionizations and excitations. Let me first explain what do you mean by these two terms, ionization and excitation. As you can see in the hydrogen atom, suppose we have an electron in the first orbit. Okay, here it is. If I want to remove this electron completely, okay, if I give it small energy, it will jump from first to second orbit, little more energy, that it may jump from first to third orbit and so on. But if suppose I want to knock this electron out of the hydrogen atom, I have to give it sufficient energy, and if that much energy is received by that electron, it will go out of the hydrogen atom. What do we call this? We call this as ionization. Okay, I hope you know this. This is known as the ionization. Right? Now the question is, how much energy I have to give to this electron? मुझे इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देनी है ताकि ये पूरा बाहर निकल जाए? तो उसके लिए I have to see what is the energy of electron when it is in the first orbit. We already know what is the energy of electron in the first orbit. Those numbers you have to remember. How much it is? Minus 13.6 electron volt when electron is in the first orbit. So if I give it an equal energy of plus 13.6 electron volt, what will be the total energy of electron? The total energy of electron will become 0. Minus 13.6 पहले से थी, plus 13.6 आपने उसको दे दिया, ठीक है? So that much energy if you give to that electron, the electron will jump out of the hydrogen atom and the hydrogen atom will get ionized. This is the ionization energy. First, let me define what is ionization energy. It is the energy required to knock out an electron completely out of an atom. It is energy required to knock out an electron completely out of the atom. Okay. Now see, what is the energy of electron in the first orbit? Minus 13.6. I want to knock it out to a very large distance, यानी मुझे इसको बहुत दूर इनफाइनाइट नंबर के ऑर्बिट में भेजना है. इनफाइनाइट नंबर का ऑर्बिट मतलब एटम के बाहर हो गया. वहां पे उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, सो द एनर्जी आई हैव टू गिव टू मेक द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0 इज प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन? इट इज प्लस 13.6 electron volt. Now how this energy is given to the electron? Electron can be given this energy in form of heat, in form of magnetic energy, in form of electrostatic potential energy. But if suppose I want to give this energy to electron by electrostatic potential energy, मुझे उसको electrostatic energy provide करके बाहर निकालना है, ठीक है? तो मुझे उसको कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, यानी हाइड्रोजन एटम के ऊपर how much potential I have to apply. Just see this. What is the energy required? 13.6 electron volt. I am giving this much energy to electron. अभी आप इसको जरा ध्यान से देखें. इस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से इलेक्ट्रॉन के पास E तो है, ठीक है ना? इसको ऐसे समझो कि E तो उसके पास पहले से ही है, ठीक है? तो यहां से E को निकाल दो तो क्या बचता है? 13.6 वोल्ट. This 13.6 volt is known as ionization potential. Got it? So what is the potential given to the, मतलब हाइड्रोजन एटम पे कितना पोटेंशियल लगाऊं ताकि वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से बाहर हो जाए? प्लस 13.6 वोल्ट. ओके, इफ आई सप्लाई दिस मच वोल्टेज टू द इलेक्ट्रॉन, इट विल गेन द एनर्जी. हाउ मच एनर्जी इट विल गेन? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी 13.6 वोल्ट एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है तो वो हो जाती है एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है. Okay, now let us talk about excitation energy. Excite, that means you are exciting the electron. इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए क्या करने का? अच्छा खाना दिखाने का, अच्छा गाना बजाने का? नहीं. इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ एक ही चीज से एक्साइट होता है, उसको आप एनर्जी दे दो तो वो एक्साइट हो जाता है. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्साइटेशन. इन दिस डायग्राम यू कैन सी, सपोज द इलेक्ट्रॉन is in the first orbit. Okay, here you don't have to knock the electron out of the hydrogen atom, but you want just to shift the electron from first orbit to second orbit. ये हो गया इसका एक्साइटेशन.
और एल्स इफ यू वांट द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू द फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है, दैट इज एक्साइटेशन। देखो पूरी तरह से बाहर निकाला तो क्या होगा, आयोनाइजेशन, और अंदर ही उसको एक एक सीढ़ियां चढ़ाते रहे, एक एक ऑर्बिट चढ़ाते रहे, देन व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट एक्साइटेशन, राइट? So what is the energy required to shift the electron from first orbit to second orbit? How to find this? Take a look at these energies again. In the first orbit, the energy of electron was minus 13.6, and it has to be jumped to the second orbit where its energy becomes minus 3.4 electron volt. तो आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ाना है, ठीक है, जितनी एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन की बढ़ाओगे दैट इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है ना। अभी इसका डिफरेंस कितना होता है 13.6 और 3.4 का, इट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इफ इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट ऑर्बिट and if you supply it energy of 10.2 electron volt, what will happen to the electron? It will come from first orbit to second orbit. Electron gets excited. Okay, so this is your excitation energy, right? This is the definition of excitation energy. It is the energy required for an electron to jump from ground state to any one of the excited state, ठीक है। See, if electron is in the very first orbit, we call it the ground state of electron. And if electron is in the second, third, fourth or higher orbits, that are known as the excited states. किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो वो उसकी ग्राउंड स्टेट होती है, और 1 से बड़े 2, 3, 4 ऑर्बिट्स में है, देन दैट इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज का आपको ध्यान रखना है, दिस इज द ग्रामर ऑफ फिजिक्स। See, if n is equals to 1, what is this state? This is the ground state. Ground. This is the ground state. Okay. Now, if the electron goes, or if the electron is in n is equals to 2, second orbit में है, what do you call it? You call it excited state. But this is what? This is the first. This is the first excited state. Clear? Now see, if again n is equals to 3, then this n is equals to 3 is the second excited state. Similarly, if n is equals to 7 मानते हैं अपन, if electron is in the 7th orbit, then that is what? That is the 6th excited state. Okay? You must learn this. n is equals to 1 होता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट के हिसाब से इट्स नंबर इज 0. नाउ द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रॉन इज मेड टू जंप फ्रॉम n is equals to 1 to n is equals to 2. From n is equals to 1 to n is equals to 2. What is the energy in the second state? It is minus 3.4. And what is the energy in the first state? Minus 3.6. So what is the difference? That is plus 10.2 electron volt. Okay, the second excitation energy मतलब electron is made to jump from first orbit to second excited orbit. What is second excited orbit? The third orbit is known as the second excited orbit. तो electron को jump करवाना है first से third orbit में. Okay, E3 minus E1 is the energy required. So what is the electron's energy in third orbit? Minus 1.51. First में कितना है? Minus 13.6. Difference कितना है? 12.09. So this is the second excited energy. Fine. Now, as we have excitation energy, we have got excitation potential also. ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट एक्साइटेशन की बात करते हैं. The energy that is given to the electron to jump from first to second orbit is 10.2 electron volt. इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी. But if I ask you what is the first excitation potential, then क्या करना? यहां से E को हटा दो. Cancel out this E. So what is the first excitation potential? It is 10.2 volt. Again, what is the second excitation potential? This is second excitation. Okay, 1, 2, 3. What is the second excitation energy? It is 12.09 electron volts. यहाँ से E को हटा दो, ठीक है? So this becomes 12.09 volt. This is the second excitation energy. Right? Remember, don't get confused when the things are given in first excitation, second excitation. ऐसे confused नहीं होना. Use your brain, be awake, be alert.